Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 5, Role of Government in Business. Topics which we will cover in this session are Introduction, Fourfold Role of Government, Regulatory Role, Entrepreneurial Role, Promotional Role, Planning Role, Regulatory Framework, and Redefined Role of the Government. So, coming towards the first topic, that is introduction. So, government plays an important role in economic development of the country. The government was supposed to take care of law and orders only. Under the state capitalism, business remains in the hand of government, and the government was given the responsibility to run, control, and regulate the business in the wider interest of the society. But soon it was realized that neither of the two extremes were in the interest of the economic development. स्टेट कैपिटलिज्म में हमारी गवर्नमेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस को चलाने की, उसको कंट्रोल करने की या उसको रेगुलेट करने की. लेकिन ये दोनों ही एक्सट्रीम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है, उसकी तरफ ग्रोथ नहीं है. इसीलिए ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की तरफ जाते हैं. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक are in fact mixed economic, with 1/3 or 1/4 occurring with the government. Capitalist economy में 1/3 या 1/4 पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है. Similarly, so-called socialist countries have 1/4 or 1/5 in the hand of private sector, और remaining part जो है वो private sector के पास होता है. Next topic is fourfold role of government. The role of government in the overall economy and business scenario has been changing very fast. Government का role change के साथ साथ change हो रहा है. Business scenario को लेके government का role day by day change हो रहा है. In traditional sense, the role of any government has been to maintain law and order. पहले गवर्नमेंट का मेन रोल होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, टू प्रमोट डिफेंस प्रोडक्शन एंड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक यूटिलिटीज़. Role of the government has shifted from doing the business itself to ensure that the business is run on sound lines. The role has assumed 4 dimensions: regulatory, promotional, entrepreneurial, and planning. Business besides these 4-dimensional role, the government also intervenes in protecting direct assistance to business and industries. इन 4 roles के अलावा गवर्नमेंट नई assistance provide कर रही है. Direct assistance means in terms of protection, financial help, technical avoidance, assistance for research and development, industrial trainings and tax incentives. इन फॉर्म्स से गवर्नमेंट डायरेक्टली बिजनेस प्रमोट करने के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रोल. The basic objective of regulating business is number 1, to prevent the market structure from becoming monopolistic. हमारी monopolistic market structure ना बने इसलिए गवर्नमेंट का मेन रोल है developing the small and new enterprise, नए और छोटे enterprise develop करने के लिए, promoting welfare of the workers sections of the society. वर्कर्स की वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. रेगुलेटरी रोल इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट. रेगुलेटरी रोल में क्या होता है कि गवर्नमेंट
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, बिजनेस को रेगुलेट करती है टू डेवलप द कंट्री. It includes control through which general norms and standards are laid down by the government. It also aims at settling the conflicts between management and the labor. While regulating business, two precautions are necessary. Business को regulate करने के लिए दो precautions बहुत ज़रूरी हैं. Number one, the legal regulation should not be excessive. Legal regulation बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Second, the regulation should be done with efficiency. बिल्कुल efficiently regulation होनी चाहिए. If these two precautions are not kept in mind, regulation may fail to achieve its objective. The government regulation over business can be direct and indirect. Government regulation दो तरह से होती है, direct controls और indirect controls के through. Direct controls are drastic in nature and discriminatory in contents. The government at its discretion directly control business at the micro level from firm to firm or from industry to industry. डायरेक्ट कंट्रोल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट बिजनेस को पूरी तरह एक्वायर कर लेती है, बेशक वो छोटे से छोटे लेवल पे क्यों ना हो, फ्रॉम फर्म टू फर्म और फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. In indirect controls, there are certain imperfections in terms of social justice. Indirect controls में क्या होता है? Indirect controls are indirect in nature and are exercised at macro level through fiscal and monetary incentives, disincentives, penalties and rewards. In India, regulatory control is exercised in the following ways. These are: number 1, Industrial Act 1951, Industrial Licensing System, Control over Capital Issue, Price Control, Distribution Mechanism, Security Contract Act, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act, Foreign Exchange Regulation Act, Regulation and Promotion of Foreign Trade, Industrial Policy, Regulation of Companies, Labor Affair, Commercial Act, miscellaneous regulatory enactments. Next is entrepreneurial role. This means that the government itself become entrepreneur. Entrepreneur role में क्या होता है? Government खुद owner बन जाती है. Entrepreneur means owner. This is called the emergence of public sector. Heavy and basic industry involve high risk, and since they do not yield attractive returns, they are ignored by the private enterprise. Heavy और basic industries जो हमारी होती हैं, means large scale industries जो होती हैं, उनमें private sector उन्हें ignore करता है because there is very high risk involved in those industries. तो उनको private sector प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको ओवरटेक करती है या गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंडर वो आती है. फॉर एग्जांपल स्टील, मिनरल, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, इरिगेशन, पावर एंड हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स आर द एग्जांपल्स. द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, द प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, the ownership and management of railway transport are some other examples. Next are the promotional role. The promotional role played by the government is indirect. Government only promote the business by providing adequate infrastructure, providing suitable environment by offering various incentives so as to boost the morale and operational activities of the business. Promotional role में गवर्नमेंट किस तरह से आपके बिजनेस को प्रमोट करती है? वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी या आपको वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी टू बूस्ट योर मोरल,
और आपकी बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करेंगी, वो इनकरेज करेंगी. There are various functions of the government in promoting the business operations. These are: number one, to maintain public utilities, to encourage the developmental attitude among various sectors, to make economic resources productive and progressive, to affect the effective utilization of various resources, to ensure adequate distribution of wealth and income, to bring about equitable balance between various regions, to control the quality of money available in terms of developmental needs, to promote investment climate in the country, to provide incentives for the promotion of foreign trade. So promotional role of the government thus formulate or thus enlarge the monetary and budgetary incentives for the fast expansion and development of the country. Next is the planning role. The role of the government as a planner is very important. This is so because in modern times government is supposed to be the custodian of the welfare of the society. Government is very important for planning. Planning के लिए government की involvement बहुत ज़रूरी है, क्योंकि government हमारी welfare, हमारी society की well-being के लिए work करती है. For the welfare of all, balanced prosperity has to be achieved. Since the objective as well as means to achieve the objective are different, it becomes necessary that objectives are clear. All this is done by planning. हमारे objective हमेशा clear होने चाहिए. To achieve a target, to get something in our favor, our objective should be clear. All this is done by planning. सब कुछ planning के through होता है. In other words, planning role implies that the government has to plan so that limited resources are directed to right object to achieve the defined objective. Planning किस लिए ज़रूरी है? Government की planning इसलिए ज़रूरी है ताकि limited resources को एक right direction में utilize करें, ताकि हम अपना objective, अपना target achieve कर सकें. Planning is universal. Every economic unit at the micro level has to plan its activity. Planning हर किसी के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए. हमें छोटे से छोटे काम को भी प्लान वे में करना चाहिए. There are two types of planning. Comprehensive planning. This involves a series of activities over a given period for the economy as a whole. Our 5-year plans are example of such planning. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग टाइम बाउंडेड होती है. हमें पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपना वो टारगेट अचीव करना है. जैसे हमारे 5-year प्लान्स इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. प्राइस मील प्लानिंग. It is temporary and ad hoc, having the objective of meeting some temporary situation. For example, planning of reconstruction after war or society security plans. प्राइस मील प्लानिंग हमारे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होते हैं या टेम्परेरी प्लानिंग कहते हैं मैंने, जिसमें हम टेम्परेरी सिचुएशन में जो हमारे टारगेट्स होते हैं या छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम प्राइस मील प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वे इन विच इट इज फॉर्मुलेटेड बट मोर ऑन द मैनर इन विच इट इज इम्प्लीमेंटेड. हमारी प्लान की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है, जैसे कि वो बना है, बल्कि जिस तरह हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. फॉलोइंग आर द बेसिक लेजिस्लेशंस which have been enacted by government to make the role of government reproductive and meaningful. Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969, Company Act 1956, Foreign Exchange Regulation Act 1947, Capital Issue Control Act
1956. This is also known as Securities Contract Regulation Act. Essential Commodities Act 1974. Banking Service Commission Act 1975. The Industrial Relation Act 1978. The Sixth Textile Undertaking Act 1974. The Urban Land Act 1976. The Companies Act 1974. Workers' Participation in Management Bill. Sikh Industry Companies Act 1985. The Consumer Protection Act 1986. And last is Industrial Act 1951. The most important legislation measure make it clear that we have provided very sound, comprehensive and exhaustive regulation framework for the regulation of business. हमने इतने अच्छे अच्छे रेगुलेशन एक्ट पास किए हैं या हमने एक फ्रेमवर्क सेट किया है जो कि हमारा बिजनेस रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन द डायरेक्शन ऑफ देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. बट हम इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. ये सबसे बड़ी और सबसे मेन प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इज रीडिफाइंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट. The government has assumed wide powers of controlling the economy. Accordingly, the government has been very active in discharging its fourfold rules. What are the fourfold rules? These are regulation, promotion, entrepreneur, and planning. How to regulate your plan, how to promote your business, who are the owner of your business, and how are you planning for the well-being and for the economic development of your business as well as for your company, for your country. With the growing realization towards the inadequacy, the ineffective results of the state's role, it was considered necessary to redefine the role of the government, and in doing so, liberalization measures were introduced around the beginning of 1980s. The new policy acknowledged that with the growth and complexity of industrial structure and environment, the interface of government through various legislation measures need to be considerably lowered and cut down. The features of the new industrial policy of 1991 are delicensing, scrapping MRTP regulations concerning concentration of economic power, liberalization of foreign investment and technological participation, redefined role of public sector. हमारी नई नई पॉलिसीज़ के थ्रू हम जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें फॉलो भी करें. इसीलिए हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी एक बनाई है जिसके थ्रू हम डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके मेन फीचर्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन, स्क्रैपिंग, लिबरलाइजेशन एंड रीडिफाइनिंग. The existing portfolio of public investment is also being changed with the view of load of public investment from the area where certain conditions are found. हमारी कुछ conditions एक ऐड हो जाती हैं जो conditions हैं industrial based on low technologies, small scale and non-strategic area, inefficient and unproductive area, area with low and zero social responsibility or public purpose, and last are areas where private sector has developed significant expertise. The new role of government envisage setting up an environment for privatization. Turning public sector into joint sector venture by private participation has also been initiated. हमारी प्राइवेटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है जिसमें हम पब्लिक सेक्टर को एक जॉइंट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. पब्लिक सेक्टर में हमारे ओनर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होते हैं, जबकि गवर्नमेंट जॉइंट सेक्टर में हमारे ओनर्स गवर्नमेंट भी होते हैं और एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी होते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप भी होते हैं.
The government is now withdrawing from these areas where private enterprise will be more efficient. गवर्नमेंट वहाँ पार्ट नहीं लेती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज अपने डेवलप हो चुका है. The privatization in phase has been planned. The new rule is likely to reduce the budgetary burden on the public. प्राइवेटाइजेशन से हमारी पब्लिक पे बर्डन कम हो जाता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. Thus, in terms of redefined approach, it would be appropriate to say that the role of the government will be in future to be provide the infrastructure and environment for healthy growth and justice of the economy of country. तो हमारी गवर्नमेंट का मेन रोल क्या रह जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पर हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो कर सके, जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है. So now following are the questions based on this session. These are: what are the basic objectives of regulating business? And number 2, state various functions of the government in promoting the business operations. Thank you. Happy learning. We learning.